Bismillahirrahmanirrahim. We were studying about inventories and we have covered almost all the topics uh, related to inventories, which is inventory cost, then the cost formulas for inventory, and the net realizable value. Uh, Today we are going to see a simple example of net realizable value in which I wanted to explain you one thing regarding the NRV of inventories, because so far the examples that we have gone through for the net realizable value, in those examples we saw that there are some external factors that are there are some external events that are happening, which are outside the business and in the overall environment, that events are happening which are causing us to believe that the cost of the inventories might exceed the net realizable value. But this thing that cost is exceeding the net realizable value of the inventory is not only limited to the external factors. There may be some internal events happening in the business itself which may lead to the situation where cost exceeds the net realizable value of the inventories. So I have drafted a simple example just to show you that there can be events, or there can be uh, some events happen. Some events can also happen within the business itself that will lead the inventory to that scenario where the cost exceeds the net realizable value of that inventory, and as a result we need to make a write down in the inventory and we need to bring the inventory up to the net realizable value. Okay, so this in this example we're going to see this. Let me also explain this in Hindi and Urdu. अब तक हमने इन्वेंट्री की जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कवर कर लिया था बहुत डिटेल में। हमने इनको टर्म्स देख ली थी, हमने जो है कॉस्ट फार्मूलाज देख ली, उनकी कंप्यूटेशन देख ली, हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यूज की डेफिनेशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया भी देख लिया इन्वेंट्रीज का, विच इज़ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखी हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये देखा है कि जैसे लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी टायर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की, उसमें कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स हुए थे कि कुछ रेगुलेशंस में चेंज आया था जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था और बिजनेस जो है वो एक एडवर्स पोजीशन में चला गया था, जिसकी वजह से हमें अपनी इन्वेंट्रीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ा था और हमें लॉस बुक करना पड़ा था इन्वेंट्री राइट डाउन का। ठीक है, अच्छा, जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी उसमें ये था कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर हुआ है, कोई एक्सटर्नल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये इन्वेंट्री राइट डाउन हमें बुक करना पड़ा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इन एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से नहीं होता, इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं। अगर कोई इंटरनल इवेंट हो गया है, जैसा कि अभी हम इस एग्जाम्पल में देखने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें अपनी इन्वेंट्रीज को जो है राइट डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। So now let's start the example. FF Enterprises is engaged in the distribution of wooden relaxing chairs of different varieties. They procure chairs both locally and internationally and sell them to the local customers at their showrooms. At December 31st, 2021, as part of the financial year closing, they conducted a physical inventory count at their warehouse and showroom. And following are the results of the inventory count. Okay, so they conducted a physical inventory count. Here are the results. So category, this is the category of chairs, category A and category B, and this is the quantity as per physical count. So they counted all the chairs, inventory of chairs present at their warehouses and their showrooms. So they found that category A chairs were 50 and category B chairs were 90. So that was the total quantity of inventories available on December 31st, 2021. Okay, uh, let's go through further. The financial records show that quantity of category B chairs are 95 as at
December 31st. So I'm assuming that category A, which is 50 as per the count, is same as per the financial records because no information is given here. So I will assume that category A is matching with the financial records. So there is no difference between physical count results and the financial records. And the only difference is for the category B shares. So financial records show that quantity of category B shares are 95 as at December 31st. Upon investigation, it was found that 5 chairs were slightly broken and were removed from customer display lobby of the showroom and not included in the physical count results. Later, it was determined that these 5 chairs can be repaired by spending rupees 1200 per chair and then can be sold at rupees 7000 each. Okay. The selling price of category A chair is 15,000 each and category B chair is 10,000 each. Okay, so it seems that these are the normal selling prices of the category A and category B chairs. Category A they can sell normally at 15,000 per chair, and category B they can sell 10,000 per chair. But for those 5 chairs that were found to be broken, they can spend some money on that, on the repair of those 5 chairs, and then they can sell those chairs at rupees 7,000. It seems that this is on the lower side as compared to the normal selling price, which is 10,000. So here we need to understand that there's some damage happened to those chairs and those cannot be sold in a normal manner. Okay, so we need to spend some money on that. So here comes the net realizable value of those 5 chairs. So in this data, as per the count, we have 90 chairs, whereas the financial records and the books of accounts show that we have 95 chairs of category B. And later it was identified that 5 chairs that were excluded and that were not included in the counting results were chairs that were broken and that were taken away and that were kept aside from the normal inventory. And later it was identified that some work can be done on those chairs by spending some amount and they can be sold also, but at a reduced selling price, which is 7,000. So here comes the discussion of NRV into play. Okay, and we'll see how we'll report the inventory and what will be the accounting adjustments related to net realizable value of that inventory we need to do. Let's see further what is the data available. The company uses FIFO cost formula and the financial records of the company show the following inventory details for the closing inventory. So the company uses FIFO cost formula and here is the data given. So these are the category of chairs, these are the quantities, purchase price per unit and purchase rate. So it seems that we can do a calculation as well for the FIFO cost formula. Okay, because we have the purchase price and the respective purchase dates. Okay, and the requirement is calculate the value of inventory to be reported in the financial statements and necessary adjustments if there is any. Okay, so uh, company uses the FIFO cost formula. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है अवेलेबल उसमें हमें इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी परचेज प्राइसेस दी हुई हैं और हमें ये बताया हुआ है कि कंपनी जो है फीफो कॉस्ट फार्मूला यूज़ करती है। लेकिन फीफो की कैलकुलेशन तो सिंपल है, हमारे पास परचेज डेट्स हैं और हमें पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू और हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 5 डैमेज आइटम्स हैं जिनको हमने रिपेयर करके हमने सेल करना है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब उसका हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं। So now I will move to the computation of the closing inventory as per the
FIFO cost formula. So I've created that computation. Okay. First, I'll show you the computation. As per the FIFO cost formula, we know that this is the closing inventory, and whenever purchases prices are available, we can compute the FIFO cost value very easily. Okay, so that is a straightforward calculation. Okay, this is the quantity, this is the purchase price, and this is the value of that inventory. So the category A shares are totally valued at 410,000. This is the value of category A shares. For category B, there is some calculation involved for the net realizable value for those 5 shares that were damaged. For that, first I have to calculate the net realizable value of the uh, net realizable value of those 5 shares. Okay, so here I am computing the net realizable value, and I will try to recall you the definition of net realizable value, which is uh, estimated selling price less estimated cost of completion less estimated cost necessary to make the sale. So here in this example, estimated selling price is rupees 7,000. Estimated cost of completion, which is the amount that is required to be spent on each broken share, that is 1200 per share, and uh, less estimated cost necessary to make sales. So in this example, we don't have any such cost. Okay, so we'll keep this at 0. So my net realizable value will be 5,800 rupees, and those 5 shares, this is the net realizable value per share. Okay, so we'll compare this net realizable value with the cost of those shares. Okay, so cost of those shares will be my purchase price. Okay, I'm assuming that in the information there is no such other elements like transportation, handling is not given, so I'm assuming whatever my purchase price is the cost of the inventory, the cost per share. Okay, so uh, for category B chairs, the chairs that were not damaged, that were fine, will that can be sold at a normal selling price. So that is fine. We don't need to do anything for those inventory items. Only for those 5 broken chairs, we need to compare the cost, which is my purchase price, which is 6,500, and my net realizable value, which we just computed, 5,800. So at NRV being lower, we need to value those 5 chairs at net realizable value, and the value comes at 29,000. So I've multiplied 5,800 with 5, 5 into 5,800, it gives me 29,000. So that will be my inventory value of those 5 chairs. Okay, 29,000. So remaining inventory, which we valued at cost, will remain as it is, will be reported at cost. Only those 5 chairs will be reported at net realizable value, and my total value of the inventory, which will be reported in my balance sheet, in my financial statements, will be 999,000 rupees. So this will be my carrying amount of inventories in my financial statements as at December 31st. Okay, सो ये एग्जाम्पल हमने देख ली, और हमने सबसे पहले एनआरवी कंप्यूट करी. एनआरवी की डेफिनेशन हमें मालूम है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल. ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है कि उन 5 चेयर्स की हमें बताया गया है कि 7,000 की वो सेल हो सकती है पर चेयर. ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो गई. 1200 का एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, जो कि हमें एडिशनल एक्सपेंस उस पर करना पड़ा. ठीक है, एक कुर्सी पे, विच इज 1200 पर चेयर. ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल इसमें नहीं है, तो वी विल अज्यूम इट 0. ठीक है,
और यहाँ पे फिर मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई पर चेयर विच इज 5800। इसको मैंने कंपेयर किया अपनी कॉस्ट से। कॉस्ट है मेरे पास परचेज प्राइस। इस डेटा में मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, मुझे ये नहीं बताया हुआ कि इसकी हैंडलिंग चार्जेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो परचेज प्राइस है 6500 यही इसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट को कंपेयर किया नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। मुझे पता है इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5800 इज लोअर देन द कॉस्ट। सो इस 5800 पे मैं वो 5 चेयर्स जो हैं उनको वैल्यू कर दूंगा। इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 29000। ये वो अमाउंट है, ये वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जिसपे मैं इन 5 चेयर्स को वैल्यू करूंगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो बाकी जो मेरे पास इन्वेंट्री है नॉर्मल, वो तो नॉर्मली सेल हो सकती है, जो उनकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस उस पर सेल हो सकती है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है। तो वो तो नॉर्मली अपने कॉस्ट पे रहेंगी क्योंकि उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है उनकी कॉस्ट से, क्योंकि वो आराम से सेल हो सकती हैं। कैटेगरी ए की चेयर जो है 15,000 में सेल हो सकती है, कैटेगरी बी की चेयर जो है 10,000 में सेल हो सकती है। सो दैट विल रिमेन एज इट इज। ओके, only adjustment will be there for the category B chairs, for those 5 chairs that were slightly broken. सो यहाँ पे मेरे पास टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होगी, जिसको मैं कैरिंग अमाउंट भी कह सकता हूँ, अपनी इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट होगा 999,000। ठीक है, ये अमाउंट आ गया जिस अमाउंट के ऊपर इन्वेंट्रीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होना है। Now I will move to the second part, which will be the accounting adjustments uh, that are required in this case. So here we know that we have done a write down on 5 chairs, and the amount of write down can be computed like cost minus NRV, because cost was greater than the net realizable value. So we will take the difference of these two. So what I did here is I subtracted my net realizable value from the cost. Cost is 6500 and my NRV is 5800. So the difference is 700, and the amount of write down will be the 700 multiplied by 5, because we have 5 chairs. So amount of write down will be 3500. So I will make the adjustment accounting entry with this 3500. Okay, we all know that what account in case of write down, the accounting entry that we need to do is we need to debit the cost of goods sold and we need to credit the NRV provision. Okay, so this is the accounting entry that will be required for this inventory valuation because of the NRV write down. And apart from this, there will be one more adjustment which is related to the expense that we have incurred for the repair of chairs, and that is computed like 1200 multiplied by 5. This gives me 6000, and this is total expense that we incur on repairing those chairs. So I am assuming that this is paid through cash. So I debited the repair expense and credited the cash just to record this uh, additional expense. And one more thing I wanted to tell you here regarding this expense, because this is not a normal uh, expense, because this happens very rarely, because I'm assuming that these chairs were handled uh, not properly handled, so they were slightly broken. So these type of things happen very rarely in the business, so we'll treat this as an abnormal expense because that will not be occurring every month, that will not be regularly, that is not a regular item to appear in the business. Okay, so anyone can think uh, that's why we are expensing this amount, why we are not adding this amount to the cost of inventory. Okay, so any item which is not normal means it's abnormal in nature and it rarely happens, we
immediately expense that amount. We will not include this repair expense into the cost of the inventories. We still have that inventory. We didn't sell that inventory. It will be sold in the next period, but we will not include this amount in the cost of the inventory. Okay, so that is important thing. That is one of the important thing related to this repair expense. Okay, we'll immediately expense this amount and we'll record it as an expense in the uh, profit and loss account. Okay, so those were the accounting entries that we need to record in this situation. Okay, अच्छा अब secondly, let me explain it in Hindi and Urdu. जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमें करनी है, राइट डाउन का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है. राइट डाउन का अमाउंट जो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, जो कॉस्ट है शेयर्स की उसको मैंने माइनस कर, उसमें से माइनस कर दी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज कॉस्ट हायर है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है. तो राइट डाउन का जो डिफरेंस आया वो है 700. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 चेयर्स से, इट गिव्स मी 3500. ठीक है, तो उससे पहली एंट्री हो गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट. आप सबको पता है कि एनआरवी राइट डाउन की जो एंट्री होती है वो एक्सपेंस डेबिट करते हैं और एनआरवी प्रोविजन क्रेडिट कर देते हैं. एक्सपेंस जो है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं. ठीक है, ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री. दूसरी एंट्री मैं आपको बता दूं कि रिपेयर एक्सपेंस की होती है. रिपेयर एक्सपेंस जो हमने एडिशनल एक्सपेंस इनकर किया 1200 पर चेयर, तो उसको मैंने 1200 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, क्योंकि 5 चेयर्स थी. ठीक है, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया और आई एम अज्यूमिंग कि वो कैश से ही पे हो गया होगा, तो मैंने कैश को क्रेडिट भी कर दिया. ठीक है, तो ये एंट्री हो गई. अब किसी के ध्यान में ये सवाल आ सकता है कि ये रिपेयर एक्सपेंस क्यों किया, इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करेंगे या नहीं. अच्छा, अब मैं इसका जवाब दे दूं कि देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी नॉर्मल नहीं यानी कि रेगुलरली अकर नहीं होता, ठीक है, तो उसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करते. अब ये जो चेयर्स डैमेज हुई हैं, ये कोई हर वक्त तो नहीं डैमेज होती होंगी ना, जो रेगुलर इवेंट तो नहीं है. ये तो कभी किसी ने मिस हैंडल कर लिया चेयर्स को, या उसको अनलोडिंग लोडिंग के दौरान जो है वो मिस हैंडल हो गई और उसकी वजह से डैमेज हो गई होंगी. ठीक है, तो ये एक रेयर एक्सपेंस है. ठीक है, ऐसे कोई भी रेयर आइटम्स जो कि एबनॉर्मल होते हैं इन नेचर, उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते. ठीक है, हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे. ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा हमने कोई एलिमेंट नहीं पढ़ा था. ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे भी कोई एबनॉर्मल नेचर का एक्सपेंस होता है, उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते. इसलिए यहाँ पे मैंने रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया. ठीक है, with this, we have concluded the topic of inventories, and so far we have seen the inventories from the trader's perspective. Uh, we still did not cover the inventories in the manufacturing business, which we will study later. Okay. Apart from that, all the aspects of the inventories, the cost of inventories, the elements of the cost, Incoterms, plus cost formulas, and the net realizable value, we have covered that. Okay, so in the next videos we'll be starting a new topic. Okay, if you have any questions related to inventories, you can comment on the videos, and if you have not subscribed the channel yet, do subscribe it. I am concluding this video. Thank you.